everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. This question I received in doubt, and I'm really sorry. I took a long time to solve it because I couldn't see it. I'm really sorry for that. Anyway, let us start with reading the question. Two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. So यहाँ पे ये distance तुम्हारा क्या है 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by smaller body just before collision. So they start moving because of their mutual gravitational force. Done it? And it is said that at the point when they will collide, by what distance this smaller block or this smaller sphere has moved. Okay. So if I treat these two spheres as system, then whatever force is acting is internal force, right? Because gravitational force is acting between these two. It is not something external to the system. So there is only internal force acting. And when there is internal force acting only, that is if external is zero, we can say center of mass acceleration will be zero. And initially, they are at rest. So finally also they will be at what? Rest. Okay. So sort of you can say center of mass position is not going to change. So I'm treating this line as the x-axis. So you can see here clearly that center of mass of first sphere is at this point, second one this point. So दोनों का ही center of mass is on the x-axis. System का भी center of mass will be on the x-axis. And this is not going to change. इसको हम exploit कर सकते हैं in order to reach to the answer. तो देखो एक cm को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Okay. Now, if you take the change on both sides, so I'm going to write delta xcm equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2 divided by m1 plus m2. And if delta xcm is 0, then you can clearly write m1 delta x1 will be equal to m2 delta x2. Done it? So, in our case, if I say first body has moved by distance of delta x1 by the time second body has moved by the distance how much? Delta x2. Such that this m1 delta x1 has to be equal to m2 delta x2, and negative sign indicates कि दोनों को opposite direction में move करना है, and here we can clearly see दोनों ही opposite में जाएंगे. So इन दोनों के displacement को हम relate कर सकते हैं. अब यहाँ से देखो m1 का mass क्या है m, and that is delta x1. magnitude की से बात कर रही हूँ. So m2 5m and this is delta x2. So clearly you can see here this is delta x1 is equal to 5 delta x2. Now देखो यहाँ पे ये दोनों सपोज कर लो कोलाइड करता है. So इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है. डन है. ये तुम्हारा कितना चला? ये तुम्हारा चला यहाँ से यहाँ डेल्टा x1, और ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये कितना है? उनके सेंटर ऑफ मास का मोशन हमने ट्रैक किया है, डेल्टा x1 डेल्टा x2, राइट? सो दिस डिस्टेंस इज योर डेल्टा x2. And this distance will be equal to how much? This is r, this is 2r, so this is 3r. If you see carefully, delta x1 plus 3r plus delta x2. So delta x1 plus delta x2 plus 3r is equal to nothing but 12r. That is the separation, right? आप put कर दो, you will be getting the answer. So delta x2 आपका क्या लिख सकते हो? Delta x1 by 5. So here delta x1 plus delta x1 by 5, and this is equal to 9r. Okay, so 6 delta x1 by 5 equal to 9r, and this will become this, and delta x1 is equal to 15r by 2. So this is your 7.5r. ठीक है. सो यहाँ से हम इजिली पहुंच सकते हैं. वैसे आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे. ज्योमेट्रिकली आप कैसे करते? जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे. सो एक सीएम का पोजीशन क्या होगा अगर मैं इसको ओरिजिन लेकर चलूं? देन दिस इज एट 0 0 m mass, and then 5m mass is at what position? 12r0, right? So x cm तुम्हारा क्या होता? m into 0 plus 5m into 12r divided by summation of masses, that is 6m, right? So this will become nothing but 10r. So 10r पे है तुम्हारा center of mass. सपोज कर लो 10r तुम्हारा कहीं भी यहाँ है.
नाउ सेंटर ऑफ मास को 10 r पे ही रहना है ना। सो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना होना चाहिए, ये 10 r है। और अभी भी जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तभी सेंटर ऑफ मास यहीं पे आना चाहिए। सो अब आप सेंटर ऑफ मास निकाल लो यहाँ से। आई मीन बाई टेकिंग न्यू ओरिजिन, सपोज कर लो मैंने इसे अभी ओरिजिन इसको माना। सो राइट नाउ इफ आई कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, व्हाट आई विल बी डूइंग, m into 0 प्लस 5m इंटू ये कितने डिस्टेंस पर है तुम्हारा 3r डिवाइडेड बाई 6m। सो दैट विल बिकम हाउ मच, 5r/2, दैट इज योर 2.5r। ठीक है। सो ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर ऑफ मास का है कितना, 2.5r, सॉरी 10r। और यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 2.5r। सो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट इज 10r माइनस 2.5r, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल मास, दैट इज योर 7.5r। सो आप जैसे भी करो यू कैन डू इट। बट हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअली आपको समझना था देन वी कैन गो दिस वे, राइट। So I hope it is clear, but in case you are still having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.